Hello to all, a very warm morning, all of you. How are you all? Hope you all are doing great and enjoying. So today we are going to proceed with a very new alphabet, that is earlier which alphabet we did? G, है ना? G means G का lower case G. So today we are going to proceed. G के बाद क्या आता है? H. एंड एच का जो लोअर केस होता है वो होता है ह, उसकी साउंड होती है ह. ठीक है, चलो मैम आपको एक बार दिखाती है. दिस इज योर अपर केस, बड़े वाला एच ऐसे ही बनाते हो. सो लोअर केस में कैसे बनेगा? ऐसे. डोंट वरी, मैम बताएगी. बट लोअर केस में मीन्स छोटी ए बी सी डी जो होती है उसमें ऐसे लिखते हैं. ठीक है, और इसकी साउंड क्या होती है? पेरेंट्स पेरेंट्स पेरेंट्स. दिस इज फॉर द पेरेंट्स. इसकी साउंड क्या होती है? ह. हिंदी में इसकी साउंड होती है ह. ठीक है, इंग्लिश में भी ह ही होती है. ह, ह हैन, ह हैट, ह हैंड, ह जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं. डोंट कॉल इट हैंड, कॉल इट ह हैंड. ओके, क्योंकि फोनिक साउंड तभी समझ आएगी. ओके, सो नाउ होप यू अंडरस्टूड. दिस इज योर अपर केस H and this is your lower case H. Okay, and the sound is also H, not H. H. Now open your workbook to the page number 1616. Okay, tell me what is this? H for horse or H horse? We are going to call it big wali ABCD में this is H for horse, and in the lower case this is H horse. Okay, chalo. So now let's check the formations. Mention the date. Come to this side means छोटू वाली side. What you have to do is you are supposed to use a standing line. आपको पहले स्टैंडिंग लाइन मेक करनी है एंड देन आपको यहाँ से टर्न करना है. टर्न कैसे करना है? ये जो ब्लू लाइन है आपकी, सेकेंड ब्लू लाइन और थर्ड ब्लू लाइन, आपको सिर्फ यहीं तक ऐसे टर्न करना है. ओके, मीन्स आपको उल्टा डाउनवर्ड फेसिंग C फॉर कैट बनाना है. फाइन. कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट रेड लाइन से थर्ड ब्लू लाइन तक, बस. ओके, चलो ट्रेसिंग करते हैं वन मोर टाइम. First we need standing line, then make downward facing curve. One more time. Standing line, downward facing curve. Okay, so now get ready. क्योंकि हम बनाने वाले हैं क्या? Dots पे. तो 2 dots at the same time. What you have to do is, मैम ने आपको बताया ना क्या करना है? Standing line and then downward facing curve. One more time. Standing line and downward facing curve. Okay, chalo one more time at the next page. Page number 17. Okay, that is page number 17. So 2 dots at the same time, standing line and downward facing curve. Hope you understood. Do the work very neatly to get the 3 stars. Okay, तो आपको अच्छा सा कंप्लीट करना है और नोटबुक में जो असाइनमेंट आएगा उसको भी कंप्लीट करना है. ओके, यू आर गोइंग टू कंप्लीट बोथ द असाइनमेंट्स इन द बुक वर्क एंड द नोटबुक वर्क टू. सो होप यू अंडरस्टूड. ह, दिस इज ह, नॉट एच. ह कैसे बनेगा? ऐसे. देखा, बन गया. फिंगर से भी बन गया. और यू कैन मेक इट लाइक विद द फिंगर और यू कैन मेक इट लाइक विद द हैंड. क्या करना है आपको? हैंड को ऐसे रखना है, थंब को अंदर फोल्ड करना है एंड ये वाला जो हैंड लेना है इसको ऐसे करना है डाउनवर्ड की तरफ. ठीक है, कर दिया, बन गया. H फॉर हैंड, H फॉर हैट, H फॉर हैन. दैट इज H. अब ह से कैसे बोलेंगे? ह हैंड, ह हैट, ह hen, her head. Okay, so make sure you are going to make sound like this only. ठीक है, we are going to move on to the next one in the next class. Bye.